Today our topic is from Nuremberg to Netanyahu, why the United States has opposed the International Criminal Court. This debate has started recently from a press conference of Donald Trump and US Secretary of State Marco Rubio. Marco Rubio was defining position of United States regarding the International Criminal Court. This is his quote, which start the first is the International Criminal Court is an illegitimate international organization and frankly illegitimate. They make themselves illegitimate because they claim that even if you are not a member of that court, they can come after you. So why begin? So we have begun. We are trying to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They are very arrogant, but now begun an effort to really try to bring their court to heel. There, Trump interfered and he said, there is no information that they are after me. You can have me. Means Rubio, not trying to defend me. He is trying to defend Bibi, Netanyahu, and various other people. So the debate started with this press conference at Oval Office from these two persons, United States Secretary and United States President. So what actually this debate was, Marco Rubio presented the campaign as protection for American personnel. The ICC threatens US sovereignty. American troops could face arrest. The court must be brought to heel. This was Marco Rubio's debate about the US sovereignty. But Trump's interference changed this position of US. Trump turned a legal argument into political revelation. Trump's interruption was that Rubio was not defending Trump, he was defending Bibi, Netanyahu and other people. We must go back to understand both parties of the story. We must go back to the origins of International Criminal Court. We will trace how temporary tribunals evolved into permanent court, explain the legal basis of those institutions, and then compare American policy across administrations. The evidence shows continuity in the basic American objection, but major variation in methods used against the court. Did the United States ever accept an independent international prosecutor? Why does Washington support some international prosecutions but resist others? Is the dispute about sovereignty or selective immunity for powerful states and allies? International criminal justice developed in three stages: military tribunals, UN ad hoc tribunals, permanent court. Before the ICC, there was no permanent international criminal court. Nuremberg and Tokyo were established after a specific war. Decades later, the United Nations Security Council created temporary tribunals for particular conflict. Nuremberg and Tokyo tried major Axis leaders after World War II. And UN ad hoc tribunals, the Security Council created tribunals for Yugoslavia and Rwanda. Their cost, delays and selective creation जो थी उसने ये ज़रूरत जाहिर की कि हमें एक परमानेंट बॉडी की इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो किसी इंसिडेंट होने से पहले, किसी कन्फ्लिक्ट होने से पहले या किसी वार होने से पहले हमारे पास मौजूद होना चाहिए. इसकी ज़रूरत पेश आई इन ट्रिब्यूनल्स और एड हॉक ट्रिब्यूनल्स के की वजह से. ये कुछ स्लाइड्स हैं न्यूरमबर्ग एंड टोक्यो, इन पे ये खुद देख लीजिएगा. ये एक और स्लाइड है यूगोस्लाविया, रवांडा, ये जो टेम्पररी यूएन ट्रिब्यूनल्स से इनको भी खुद थोड़ा देख लीजिए. हम जो यूएस और आईसीसी का केस है उसको देखते हैं. थोड़ा आईसीसी को देखेंगे. The words court and tribunal are sometimes used interchangeably.
So the name alone does not decide legality. This is a difference between tribunal and court. Tribunal usually created for a particular conflict, territory, period, or group of defendants. Court normally a continuing institution with jurisdiction defined by a standing legal instrument. This is a difference. The Rome Statute transformed temporary justice into permanent system. Rome Statute adopted by 120 states voted in favor. The United States voted against. Clinton had signed the Rome Statute but not ratified. Even if he had not sent the this to the United States Senate, because United States Senate has the authority to ratify the treaties. But ICC began operating the statute because the statute entered into force after 60 countries ratified it. It was the Rome Statute was adopted in 1998 and entered into force in 2002. The ICC prosecutes people for 4 categories of crimes: genocide, crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression. The ICC's reach is broad but not unlimited. The ICC does not claim jurisdiction over every person everywhere. जो ICC की jurisdiction है वो किस चीज पे बेस करती है? टेरिटरी, नेशनलिटी एंड सिक्योरिटी काउंसिल. टेरिटरी में क्या होता है कि वो जो स्टेट है वो खुद अगर सिग्नेटरी है रोम इंस्टीट्यूट का, मेंबर है आईसीसी का, तो उस पर आईसीसी की जुरिस्डिक्शन है. नेशनलिटी, क्राइम्स कमिटेड बाय नेशनल ऑफ अ स्टेट पार्टी. अगर कोई बंदा जो उस स्टेट में रहता है उसने कोई क्राइम किया है तो उस पर भी आईसीसी की जुरिस्डिक्शन है. क्राइम एक हो गया टेरिटरी, क्राइम्स कमिटेड ऑन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट पार्टी और स्टेट एक्सेप्टिंग जुरिस्डिक्शन. नेशनलिटी दूसरा, क्राइम्स कमिटेड बाय नेशनल ऑफ अ स्टेट पार्टी. तीसरा, सिक्योरिटी काउंसिल. A Chapter 7 referral can reach a situation outside normal treaty membership. मतलब सिक्योरिटी काउंसिल अंडर चैप्टर 7 ऑफ जो सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन का चार्टर है उसके चैप्टर 7 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल रेफर कर सकती है. अब आते हैं कॉम्प्लीमेंटरिटी मेक्स द आईसीसी अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. रोम इंस्टीट्यूट डिस्क्राइब्स द आईसीसी एज अ कॉम्प्लीमेंटरी टू नेशनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शंस. रोम इंस्टीट्यूट ये कहता है जो नेशनल कोर्ट्स हैं वो सबसे पहले हैं, बाद में आईसीसी है. पहले कोर्ट्स एक्शन लेंगी, बाद में आईसीसी के पास वो जा सकता है. द रोम Institute describes the ICC as a complementary to national criminal jurisdictions. A functioning national investigation can therefore make a case inadmissible provided it is genuine. मतलब पहले उस नेशन की जो कोर्ट है, उसकी कंट्री की, स्टेट की जो कोर्ट है, पहले अथॉरिटी उसकी है कि वो केस उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू जाए. मगर if that court or that state has no genuine criminal justice system, like the conditions now in Israel, because Israel cannot punish Netanyahu and other leaders of the IDF, or US will not prosecute their servicemen, service persons of military and other leaders in war crimes and genocide. So ऐसे केसेस जो होते हैं इनमें ये जो रेफर किए जाते हैं आईसीसी को, या आईसीसी की जुरिस्डिक्शन उन पे खुद आ जाती है.
The United States argues that democratic states with capable courts should not be second-guessed. ICC supporters respond that formal institutions are insufficient if those institutions do not genuinely address the alleged conduct. Washington objected to the court before its first case. आईसीसी बनने से पहले अभी रूम इंस्टीट्यूट साइन हो रहा था, तभी वाशिंगटन ने क्या किया, यूएस ने क्या किया, ऑब्जेक्शंस लगा दिए। अमेरिका का कंसर्न क्या है? उनके सोल्जर्स और अदर ऑफिशियल्स ऑपरेटिंग अब्रॉड, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे स्टेट्स में मिलिट्री बेसिस हैं। यूरोप में, मिडिल ईस्ट में उनके बेसिस हैं। उनका जो वहाँ रवैया है, उनके जो कंडक्ट है, वो ऐसा नहीं है। वो इन्वॉल्व होते हैं वार क्राइम्स में और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सो अमेरिका डज नॉट वांट them to be prosecuted by the ICC. So it is the concern of the ICC, US. But Washington also preferred a system controlled more closely by the Security Council. Why? Because US has veto power there, and in case of its own servicemen, US will veto. So they have veto power there. But the critics of the US position say this amounts to demanding accountability for others while retaining a special exemption for itself. मतलब selective justice जिसको कहते हैं, अमेरिका दूसरों के लिए, जो दूसरे लीडर्स हैं, जो इन्वॉल्व हैं, उनके लिए कहता है यू कैन प्रोसिक्यूट देम बट नॉट अस, अमेरिकन को नहीं। जैसे रशिया यूक्रेन वार में हुआ है, दे वर हैप्पी व्हेन आईसीसी इशूड अरेस्ट वारंट्स फॉर नेतन्याहू, फॉर Vladimir Putin, but they became aggressive and against the ICC when it issued arrest warrants for Netanyahu, because Netanyahu is ally of US. Bill Clinton had signed the treaty but withheld ratification. Bill Clinton ने रूम इंस्टीट्यूट को साइन किया था, बस उसकी रेटिफिकेशन नहीं दी थी। रेटिफिकेशन मैंने पहले भी बताया कहाँ से होती है, यूएस सेनेट से। तो इसने यूएस सेनेट ये भेजा ही नहीं। उसके बाद आया बुश जूनियर। बुश फॉर्मली रिजेक्टेड एनी इंटेंशन टू ज्वाइन। बुश ने कहा नहीं, हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे। उसने जो ट्रीटी साइन हुई थी उसको भी अनसाइन कर दिया। यूएस डिड नॉट विथड्रॉ फ्रॉम आईसीसी मेंबरशिप, इट हैड नेवर बिकम अ मेंबर। यूएस ने विथड्रॉ नहीं किया क्योंकि यूएस ने मेंबर था ही नहीं, जस्ट they unsigned a treaty. The Bush administration notified the UN that the US did not intend to ratify the Rome Institute. In 2002, President Bush signed the American Servicemembers Protection Act on August 2nd, 2002. 1 month after the ICC began operating. तो इस एक्ट था क्या, कोऑपरेशन रिस्ट्रिक्टेड, यूएस एजेंसीज वर जनरली बेयर्ड फ्रॉम सपोर्टिंग स्पेसिफाइड आईसीसी एक्टिविटी। दूसरा, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड, रूल्स इन दिस एक्ट रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर्स ऑफ सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट मटीरियल। तीसरा क्या था, असिस्टेंस कंडीशन, certain military assistance could be withheld from some ICC member states. मतलब जो मेंबर स्टेट्स आईसीसी के मेंबर स्टेट्स हैं, हम उनकी मिलिट्री असिस्टेंस भी बंद कर देंगे। It also contained exceptions and waiver powers, so it was not a total prohibition on every form of cooperation. The president could use, इसका जो मेन जो इसका आर्ग्यूमेंट था, जो मेन
इसका आर्टिकल है इस एक्ट का, वो ये है, द प्रेसिडेंट कुड यूज ऑल मीन्स नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट टू फ्री कवर्ड पर्संस। इसी आर्टिकल के तहत इस एक्ट को कहा जाता है हेग इन्वेजन एक्ट। जो क्रिटिक्स हैं इस एक्ट के, SPA एक्ट के जो क्रिटिक्स, वो इसको कहते हैं हेग इन्वेजन एक्ट। मतलब the nickname comes from imagining the most extreme interpretation of the release provision because the ICC sits in the Hague। ये इंटरप्रिटेशन क्यों है? क्योंकि जो पिछला मैंने आर्टिकल बताया ASPA एक्ट का, वो यही था कि हम एक्सट्रीम मीन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सट्रीम मीन्स ये है कि दे कैन इन्वेड द Hague and recover their persons whichever they are। Article 98 of the statute concerns surrender requests that conflict with other international obligations। Washington built international shield around US personnel। States were asked not to surrender specified Americans to the ICC without US consent। Second, military aid pressure, some ICC members risked losing military assistance if they refused immunity agreements। Nethercut pressure, later restrictions also affected some economic support funds। The Bush administration used bilateral agreements to prevent transfer of American personnel। ये सारी चीजें जो है ये bilateral हैं। अगेंस्ट ICC ये bilateral agreements हैं जो US ने किए दूसरे कंट्रीज के साथ। तो क्रिटिक्स का कहना यह है, वाशिंगटन वाज यूजिंग एड एंड अनइक्वल पावर टू वीकन द कोर्ट। इवन बुश टॉलरेटेड ICC व्हेन इट सर्व्ड US ऑब्जेक्टिव्स। US का ये रहा है कि जब ICC US के ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करती है, वहां ये टॉलरेट करते हैं। जैसे दारफोर रेफरल 2005, द सिक्योरिटी काउंसिल रिफर्ड दारफोर टू द ICC। Sudan was even not ICC state party। The US abstained instead of vetoing। ये गया था थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल, फिर भी US ने वीटो नहीं किया, यहां उसको एब्सटेन कर दिया। Indirectly supported this। The emerging pattern, resistance when Americans may face scrutiny। तब रेजिस्टेंस होगी जब अमेरिकन्स स्क्रूटनी फेस करेंगे। बाकी कोऑपरेशन या टॉलरेंस होगी जब अदर कंट्रीज आर फॉरेन पॉलिसी गोल्स जो हैं US के सर्व होंगे। ओबामा रिप्लेस हॉस्टिलिटी विथ सिलेक्टिव एंगेजमेंट। Obama changed the method, not the core legal position। Administration saw practical value in the court against actors such as Lord's Resistance Army in situations such as Libya, while keeping the US outside the treaty। Selective engagement therefore replaced the Bush era campaign of broad isolation। बुश ने क्या किया? आइसोलेट ICC से, और ओबामा ने क्या किया? सिलेक्टिव एंगेजमेंट। फिर क्या हुआ? अफगानिस्तान ब्रॉट ICC jurisdiction डायरेक्टली टू अमेरिका। क्यों? क्योंकि अमेरिका वार ऑन टेरर में अफगानिस्तान में इन्वॉल्व था, तो वहाँ एलिगेशंस थे कि वो अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका जो है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड वार क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो कोर्ट ने वहाँ जुरिस्डिक्शन क्लेम की, क्योंकि अफगानिस्तान वाज द रूम इंस्टीट्यूट स्टेट पार्टी, alleged crimes occurred on its territory, so foreign nationality did not remove territorial jurisdiction, we have discussed before। ऑब्जेक्शन क्या था वाशिंगटन का? US and CIA personnel could face investigation even though America never joined the court। ये ऑब्जेक्शन लगाया, अभी तक जो इनका ऑब्जेक्शन है। Now comes the first term of Trump administration। Trump's first term escalated opposition and sanctions against ICC and its staff। Threats and visa action, जैसे प्रोसिक्यूटर फतुओ बेनसूदा की वीज़ा कैंसिल की थी US की
अफगानिस्तान इन्वेस्टिगेशन में जो जजेस इन्वॉल्व थे उनको थ्रेट दिए गए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए उनके जो मेंबर्स थे, जजेस थे और जो अदर पर्सनल थे ऑफ आईसीसी। सपोर्टर्स कॉल दिस नेसेसरी डिटरेंस, जो ट्रम्प के सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा ये डिटरेंस जरूरी है। क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट सैंक्शंस अगेंस्ट जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स अटैक जुडिशियल इंडिपेंडेंस। बाइडेन रिमूव्ड सैंक्शंस बट प्रिजर्व द यूएस रेड लाइन। बाइडेन ने जो ट्रम्प ने सैंक्शंस लगाए थे वो खत्म कर दिए, रिमूव कर दिए, मगर प्रिजर्व रखा यूएस रेड लाइन को। यूएस डिड नॉट ज्वाइन द आईसीसी। बाइडेन रिजेक्टेड आईसीसी जुरिसडिक्शन ओवर इजराइल। वाशिंगटन सपोर्टेड अकाउंटेबिलिटी एफर्ट्स अगेंस्ट रशिया। क्योंकि जब प्यूटन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुए थे तब बाइडेन प्रेसिडेंट था, वहां सपोर्ट किया गया, मगर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई नेतन्याहू के अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट, बाइडेन रिजेक्टेड इट। Ukraine and Palestine expose a consistency problem. The legal and political circumstances are not identical, and Washington disputes aspects of Palestinian jurisdiction and complementarity. Nevertheless, both situations involve alleged conduct by nationals of non-member states on territory over with the ICC claims jurisdiction. Because Russia is not an ICC member, and also Israel is not an ICC member, the US supported accountability in case of Russia, but it rejects accountability in case of Palestine because it is against its ally Netanyahu and Israel. The Netanyahu warrant placed Israel at the center of the conflict. On 21st November 2024, ICC warrants issued for Benjamin Netanyahu and Joe Gillen. Legal bases were claimed that Palestinian territorial jurisdiction covering Gaza and West Bank, including East Jerusalem, are the jurisdiction of the ICC because Palestine is the signatory of the Rome Statute. Legal status: a warrant reflects reasonable grounds, not a conviction. The court said Israel's consent was not required because its jurisdictional claim rested on Palestinian territory. The 2025 executive order did not hide the connection to Israel. Trump's second term broadened the pressure campaign. सेकेंड टर्म में ट्रम्प ने क्या किया, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 2025 में जारी किया. इट डिस्क्राइब द आईसीसी एज टारगेटिंग बोथ अमेरिका एंड इट्स क्लोज अलाई Israel, and treated the Netanyahu and Gillen warrants as a dangerous precedent for US personnel. उन्होंने कहा अगर हमारे अलाई के साथ ये रवैया अख्तियार किया जा रहा है तो इट इज अ डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर आवर यूएस military personnel and service persons serving in different parts of the world. So the present campaign therefore combines an old sovereignty doctrine with an immediate alliance commitment. क्योंकि ये doctrine जो है sovereignty की is its beginning of the since beginning of the ICC, since creation of the ICC. ये sovereignty का जो आलाप है ये गाते रहे हैं US since 1998. मगर ये जो कैंपेन है अगेंस्ट आईसीसी जो अभी चल रही है 2026 में या 2024 से स्टार्ट हुई है, इसने जाहिर किया है इमीडिएट अलायंस कमिटमेंट को. So Rubio also claimed there are 5 countries that have given up the membership of ICC. But what official records establish, announcement is not completed withdrawal. क्योंकि announcement withdrawal नहीं होता जब तक उनका मुद्दा पूरा ना हो जाए. Niger, Burkina Faso, Mali has notified UN in June 2026, but they effective will be non-member states of the ICC from June 2027. So that Trump revealed the beneficiary, not the origin of US opposition of the ICC. अभी जो ये कैंपेन चल रही है अगेंस्ट आईसीसी, इसका बेनिफिशियरी इज इजराइल और नेतन्याहू, मगर ये जो यूएस की अपोजिशन ऑफ द आईसीसी ये चल रही है.
अभी US wants to save Netanyahu. Trump's sentence reveals immediate political priority of the campaign, but history prevents us from saying the Netanyahu created American hostility to the court. Both sides raise serious legal and political concerns. The American objection raises questions about treaty consent and exposure created by global military deployments. The opposing argument is that non-membership cannot become a permission to commit crimes on member state territory, especially when domestic accountability is absent or not genuine. And US policy changed in method but retained one red line. The historical pattern is neither complete continuity nor complete change. Every administration kept the US outside the Rome Statute and resisted general ICC authority over Americans. What changed was the willingness to cooperate in selected foreign cases. मतलब जहां अमेरिका ने चाहा वहां कोऑपरेट किया, जहां उनका इंटरेस्ट नहीं था उन्होंने कहा ये हमारी रेड लाइन है. So the students can use this case in questions on international organizations, sovereignty, the rules-based international order, US foreign policy, Palestine, multilateralism, and global South criticism. The selective institutionalism support for institution when it advances national objectives combined with resistance when it constrains the state or its allies. In conclusion, the question arises sovereignty or selective immunity. American opposition is structural but not uniform. It began with objections to the Rome Statute, became the law through ASPA, softened into selective engagement under Obama and Biden, and escalated through sanctions under Trump. Today's campaign explicitly protects Israel and Netanyahu. So the question is, can international justice be credible if powerful states welcome it for opponents but reject it for themselves and their allies? If you want, every major international development converted into structured CS and CC notes, subscribe to Carpal Services Academy and follow the News to Notes series. Thank you.